बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेरी गुड मॉर्निंग। कीअं आहियो दोस्तो? तव्हां ठीकु आहियो? मज़े में ख़ैर सां? मूंखे उमेदु आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो। आउं ठीकु ठाक आहियां, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तो, इंसानु हमेशह इहो ई सोचींदो आहे त अॼु को ॾींहुं कीअं गुज़रंदो, अॼु सुबुह थियो, अॼु मूंखे कहिड़ा कहिड़ा कम करणा आहिनि, छा छा करिणो आहे। इहे सभु शयूं त रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में हूंदियूं आहिनि, पर ख़ासि तौर ते ॿ ॾींहं हफ़्ते में अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके असांखे वरी थोरो डिफरेंट कंदा आहिनि। हिकिड़ो हूंदो आहे जुमे जो ॾींहुं, ॿियो हूंदो आहे आचर जो ॾींहुं। आचर ते थोरो इहो हूंदो आहे त छाकाणि त हूंदी ई मोकल आहे, थोरो रिलैक्स मूड में हूंदा आहियूं, पर जुमे ते जॾहिं कमकार करे त वरी जेको विचो टाइम आहे, जेको नमाज़ जो टाइम आहे, जंहिं लाइ असां ख़ासि टाइम कढंदा आहियूं, त उहो नमाज़ जो अॼु को ॾींहुं आहे, अॼु भलारो ॾींहुं आहे, बाबरकत ॾींहुं आहे। ऐं वरी इंशा ताला जेको अॻियों जुमो ईंदो उहो सभिनी खे रोज़ो हूंदो। त हिन जुमे ते जॾहिं असां हमेशह इहो चवंदा आहियूं त ख़ासि दुआउनि जो एतमामु थींदो आहे त हिक ॿिए खे माफ़ु करणु सिखूं, माफ़ु कयूं ऐं माफ़ी करूं अगरि का तकलीफ़ थी आहे त। बहरहाल ॾींहं जो आगाज़ कंदासीं। मुल्क जी सूरत हाल कॾहिं हेठां कॾहिं मथे आहे, सियासी गर्मी पद वधे पियो, उन सां गॾो गॾु मौसमी गर्मी पद बि वधे पियो पूरे मुल्क में। ख़ासि तौर ते अॼु जीअं असांजे कल्ह मिठी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड हुयो, असां वटि कराची में बि तक़रीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड। त गर्मी वधे पई, उन लाइ पखी पुखण जो ख़्यालु रखिणो आहे, त उनखे बि पाणी पीअणो आहे, दाणा खाइणा आहिनि। तव्हांजी असांजी नियत सां जेकर असां हुननि जे लाइ बि कुझु वक़्फ़ु कयूं त सुठो थींदो। मूंखे उमेदु आहे तव्हां ठीकु ठाक हूंदो। ॾिसो, इहा दुआ कंदो आहियां त रब पाक हक़ऊं बि रखे, नाहक़ऊं बि रखे, सभई चवंदा आहियूं असां। काफ़ी शयूं अहिड़ियूं आहिनि जॾहिं अख़बारूं पढ़ूं था या के अहिड़ा वाक़िया ॿुधूं था त यकीननि दिलि ॼण त विसामजी थी वञे। खोड़ अहिड़ा इशूज़ के घरेलू तकरार था, अणबड़त था, ख़ानदानी झेड़नि मां ऐं क़बीलाई झेड़नि में जेके नुक़सान थियनि था। हीअं जीअं अॼु पंहिंजी अख़बार में हूअं त धमकी वारा ख़त, इस्तीफ़ा ॾींदुसि न ॾींदुसि, इहे पंहिंजी जाइ ते हिकिड़ी पॉलिटिकल हलंदी रही आहे असां वटि ईअं पोज़ीशन जा। पर जेके पर्सनल सजावल जुड़े में पुराणे तकरार तां जेको हमिलो थियो आहे घरवारी समेत, काफ़ी माण्हू जेके अजल जो शिकार थिया, क़तल थिया, केॾो वॾो सान्यो आहे उन घर जे लाइ, उन ख़ानदान जे लाइ, उन पाड़े वारनि जे लाइ, मिटनि माइटनि जे लाइ। हिकिड़ी खिलंदड़ ज़िंदगी विसामजी वञे त उते अहसासु थींदो आहे त दुनिया में पोइ महांगायूं, पोइ मसइला हिकिड़ी जाइ ते, पर जॾहिं कंहिंजो पहिरीं प्यारो हितां हलियो वेंदो आहे न, पोइ शायदि उनजे घर भातियुनि खे उनजो अहसासु हुजे, उनजी कमी पोइ महसूसु थींदी आहे जॾहिं उहो हमेशह लाइ हलियो वञे। हिकिड़ा रिश्ता या हिकिड़ा पल अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके कावड़जी वेंदा आहिनि, नाराज़ थी वेंदा आहिनि या अलहदगियूं थी वेंदियूं आहिनि, त उहे वरी बि बर्दाश्त जुगा हूंदा आहिनि। पर हीअ जेको विछोड़ा आहिनि इहे मारे विझंदा आहिनि। सो इन करे असांजी हमेशह दुआ आहे त चल अमन अमान सां रहिजे, नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि तां झेड़ा, नंढियुनि नंढियुनि मसइलनि तां ज़िंदगियुनि खे ख़तमु करणु या पाण या क़तल करणु, इन जो इंसाफ़ ज़रूरु थींदो आहे। अॼु न त सुभाणे कंहिं बि सूरत में उहा शइ माफ़ु न थींदी आहे। सो इन करे पढ़ीसीं अख़बार त इहा ख़बर पई त बहरहाल असांजी दुआ आहे त शल सिंध सरही हुजे, साई हुजे। उन सां गॾो गॾु दोस्तो रमज़ान मुबारक जो बाबरकत महीनो अचे पियो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह अलाह करे त शल नसीबु थिए, ज़िंदगी जी का ख़बर न आहे। रमज़ान बरकतुनि, रहमतुनि ऐं फ़ज़ीलतुनि जो महीनो आहे। हिन महीने में घणो कुझु मिलणो हूंदो आहे सॼे साल जे लाइ, ज़िंदगी जे लाइ, जेको करे चुका हूंदा आहियूं उनजी बख़्शिश जे लाइ, ऐं जेके ईंदड़ पल आहिनि उन्हनि खे ख़ुशगवार ऐं सुठे पलनि में ॾिसण जे लाइ दुआउनि जो सिलसिलो बि जारी हूंदो आहे। माफ़ी वठणु, माफ़ी ॾियण जो बि सिलसिलो जारी हूंदो आहे। उन सां गॾोगॾु जेको सॼो साल असां हड़ में जेको हूंदो आहे उनजी ख़ैरात वरी या ज़कात जेके चवंदा आहियूं असां, उहो वरी हिन साल कढण जी इन करे कोशिशि कंदा आहियूं ताकी उनजो अजर वधीक आहे। जेकॾहिं हूअं नमाज़ुनि जो सवाबु हिकिड़ो आहे त रमज़ान मुबारक में नमाज़ पढ़ण जो सवाबु इंटायरली डिफरेंट आहे, वधीक आहे। त पोइ वरी ज़कात बि कोशिशि कंदा आहिनि घणा, हिकिड़ा त उहा ज़कात या उहा ख़ैरात जेका सॼो साल पई हलंदी रहंदी आहे, पर जेका हिसाब किताब वारी ज़कात आहे त उहा कोशिशि कंदा आहिनि माण्हू त असां रमज़ान मुबारक में कढूं। सुठी ॻाल्हि आहे, बहितरीनु ॻाल्हि आहे। पर उन सां गॾोगॾु इहो बि ज़रूरी आहे त उन में पोइ देरि न कजे, उन में पोइ इहो एतिरो इंतज़ारु न कजे त ईद जे हिकिड़े ॿिनि ॾींहंनि खां पहिरीं माण्हुनि खे कपिड़ा वठी ॾियणा आहिनि या कंहिंजी मदद करणी आहे या को हिकु हथु ॿिए हथ खे न ॾिसे वारो जेको कॉन्सेप्ट आहे, बिल्कुलु। पर वक़्तु आहे थो हुजे, कंहिंजी ज़रूरत आहे, कंहिंजी मजबूरी आहे, कंहिंखे घुरिज आहे, उहा उनजे वक़्त ते कजे त बहितरु आहे। असां वटि केरु माण्हू गाॾियूं वठंदा आहिनि न त पोइ चवंदा आहिनि साईं गाॾी त आहे 20 लखनि जी, 2 लख रुपया ओन अथसि। हीअ ओन छा आहे जेसीं तकड़ी मिलंदी, उहो तकड़ छो करे माण्हू जे करे वरे त साईं एक्साइटमेंट जा त पैसा हूंदा आहिनि उन वक़्त जा। सो इन करे
वक़्तायती शयूं बहितर हूंदियूं आहिनि, वक़्तायता फ़ैसिला सुठा हूंदा आहिनि। ऐं जीअं मूं ॻाल्हि कई पंहिंजे प्रोग्राम जे आगाज़ में, जॾहिं मुंहिंजी ख़बर पई सजावल जुड़ेजो में तकरार तां जेको हीउ थियो आहे, 1.5 साल में 20 जानियूं ज़ाया थियूं आहिनि। बहरहाल अल्लाह ख़ैर करे। ऐं असां वटि दादा निसार खोखर हींअर लाइन ते मौजूदु आहे, तमामु सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, बिल्कुलु बहितरीनु तजुज़ो कंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सराद भाउ। कहिड़ो हाल आहे निसार भाउ? ठीकु आहियो? मज़े में, ख़ैरियत सां? मॉर्निंग बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु। कीअं आहे लाड़काणे जी मॉर्निंग? लाड़काणे मॉर्निंग हाणे कुझु गरम गरम आहे, छो त गर्मी जी आमद आहे। हा, लाइट बि आयल आहिनि, लोड शेडिंग जारी आहे। लोड शेडिंग हिते तमामु घणी 18 कलाक जी लोड शेडिंग हूंदी आहे। अञा छा खपे तव्हांखे? 6 कलाक? हा, इहा बसि ईअं सिंघण लाइ ॾींदा आहिनि लाइट, ॾिसो लाइट हीअं। हा, लाइट हीअं हूंदी आहे। इहो निसार भाउ ॿ वॾा इम्पॉर्टेंट इशूज़ जेके, हिकिड़ो त नाज़िम वारो तव्हां ज़ाती तौर ते आयो, ज़ाती तौर ते तव्हांजूं मुलाक़ातूं थियूं, ऐं ॿियो हीउ जेको सुजावल जुड़ेजो में जेको तकरार तव्हांजे, हीअ केसीं ताईं इहे शयूं असांजी सिंध में हलंदियूं रहंदियूं? हीउ ॾिसो, जेसि ताईं असां वटि इहो निज़ाम आहे तेसि ताईं त ईअं हलंदो रहंदो। यानी शहीद नाज़िम जोखे जो क़त्ल ते तव्हां ॾिसो त न रुॻो जेको आहे सो सॼी सिंध उथी पई, बल्कि मां सम्झां थो त मुल्की ऐं परॾेही सतह ते उनखे जेको आहे सो शहीद माहौलियात करार ॾिनो वियो त वाइल्ड लाइफ जे करे हिकिड़ो माण्हू पंहिंजी जान ॾेई छॾे, इन हद ताईं हलियो वञे त इन खां वधीक कहिड़ी थी सघे थी। यानी ज़ाहिर आहे हुनजी का जेके शिकारी हुआ उन्हनि सां का ज़ाती दुश्मनी त कोन हुई। सही ॻाल्हि आहे। हुन तलूर जी जेको नायाब नस्ल आहे उन जे बचाव जे लाइ उहो भई एहतिजाज कयो ऐं उन्हनि खे चयो त इहे असांजा घर आहिनि, हिन पासे छो पिया अचो। ऐं जेको असां चवंदा आहियूं हमेशह त बाबा जेको बि पंहिंजे नंगनि ऐं डंगनि जी हिफ़ाज़त कंदो आहे उहो सूर्य माण्हू आहे। सही। त अहिड़नि किरदारनि जो जेको आहे न क़त्ल थी वञे ऐं उनजो को वाली वारिस न हुजे, हिकिड़े साल बि न थिए, यानी नवंबर 2021 में इहो मर्डर थियो आहे, नवंबर 2022 बि न थियो आहे त उहो केस अचे पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो आहे, मंतकी अंजाम ते पहुतो आहे। ऐं बासर असां वटि माण्हू ॾिसो त केतिरो ताक़तवर थिए थो, जो मुल्क जो सिस्टम उनखे केॾी सपोर्ट थो करे। यानी सिंध जो कराची जो एडमिनिस्ट्रेटर उहो पंहिंजी गाॾी में खणी वञे थो ऐं जॾहिं उनजी फुटेज ठहे थी त उहो अयाज़ बिरोही ते तशदुद करे थो पंहिंजो टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर ते त बाबा तूं फुटेज छो थो ठाहीं। सो जेसि ताईं इहो सिस्टम आहे, जेको सिस्टम ताक़तवर जे अॻियां कमज़ोर आहे, भले उहो इंतिज़ामी सिस्टम हुजे, भले उहो अदलिया जो सिस्टम हुजे, भले उहो राजूनी सिस्टम हुजे, पर उहो सिस्टम जेसि ताईं न टुटंदो तेसि ताईं अहिड़ा वाक़िया असांजे साम्हूं ईंदा रहंदा। हाणे केतिरा ई माण्हू जेको आहे सो शीरी जोखियो ते इल्ज़ाम लॻाइनि पिया त बाबा उहा हीअं करे हा, हीअं करे हा, पर ॻाल्हि इहा आहे सजाद भाउ त असां जंहिं समाज में रहूं था उन में अकेली औरत जंहिंजा मासूम ॿारड़ा हुजनि, उहा इंसाफ़ लाइ अकेले सिर्फ़ु विढ़ंदी त केतिरो? सही ॻाल्हि आहे। इंसाफ़ जेकॾहिं मिली बि वियो बिलफर्ज़, इंसाफ़ हूंदो आहे जहिड़ो हूंदो आहे हिक जेतिरे सां, या नंढे सां या वॾे सां माण्हू न पुॼी सघंदो आहे न। हा हा। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त माण्हू बार बार हिन केस में, छो त मुंहिंजो श्री जोखियो सां बि जेको आहे सो असां वियासीं, हुनजे मथे ते हथु रखियोसीं, जेतिरी कुझु हुनजी मदद हुई उहा करणी, पर माई जिंदो सां बि मुंहिंजो सुठो तालुक आहे। माण्हू मिसाल ॾियनि था त माई जिंदो जो, पर माई जिंदो खे बि इंसाफ़ जे लाइ पंहिंजूं जेरियूं ॿ धेरियूं साड़ियूं पयूं। इहो त ॾिसो न, यानी शीरी पाण खे साड़े या बचन खे साड़े, तव्हां हुन मां इहा त उमेद रखो जंहिंखे पंहिंजो ॾेर, पंहिंजी ससु, मतिलबु जेको घर आहे, घर जा भाती आहिनि, उहे सभु छॾे वञनि त हू अकेली औरत वीचारी केतिरो विढ़ंदी। सही ॻाल्हि आहे। ऐं जंहिंमें समूरो सिस्टम आहे उहो ॿिए पासे बीठल आहे, ताक़तवर धुर बि बीठल आहे, जंहिंमें वक़्त जी हुकूमत बि उन पासे बीठी आहे। वक़्त जी हुकूमत उनखे पाण खणी अची, यानी एयरपोर्ट ते रिसीव कनि था, उन्हनि खां प्रोटोकॉल सां रिसीव था कनि, ऐं उहो दुबई में वेठो आहे। ज़ाहिरा केस जो मयार त एॾो हुयो न, जेकॾहिं मयार ते हलिजे हा त MNA साहिब दुबई न फरार थिया न। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु। पर हुनखे ख़बर हुई त इन केस जा रिपरकशन्स केॾा ॾुखिया आहिनि, तंहिंजे करे हू हलियो वियो। पर मेन ॻाल्हि इहा आहे की उनजे बावजूदि समूरी सिंध इन ते न रुॻो कावड़ में हुई, पर तव्हां ॾिठो त धरणे में बि थिया, ऐं केतिरा ई जेके आहिनि उहे सभु माण्हू आया धरणे ते, त बाबा उन वक़्तु वज़ीर आला पाण आयो हुननि जे तॾे ते, पर उनजो अंजाम ॾिसो हिकिड़े साल बि न गुज़रियो आहे उन ते थी थो। पर के धुरियूं ईअं बि चवनि थियूं निसार भाउ त सुठो थियो जो शीरीन इहो फ़ैसिलो कयो त हुननि पंहिंजे बचनि खे बि सेव कयो, हुननि जे लाइ छित बि ठाही, हुननि जे ख़र्च पखे जा पैसा बि हो,
ऐं शीरीन वारा बयान वक़्तनि फ़वक़्तनि मुख़्तलिफ़ हवालनि सां बदिजंदा रहिया। कंहिं वक़्तु कंहिं पासे बीठी, कंहिं महिल कंहिं पासे बीठी, सोशल मीडिया, दोस्त मीडिया हुन सां गॾु बीठी, पर ऑब्वियसली उहे हिकिड़े वक़्ती तौर ते, पर जॾहिं हुनखे अकेला ई मिली ऐं पोइ हुन ॾिठो त मुंहिंजे हड़ में त कुझु कोन्हे, घर वारो बि वियो, उनजो भाउ बि ॿिए पासे बीठो आहे, घर भाती ॿिए पासे बीठा आहिनि, ऐं अकेली पोइ पेट गुज़र कीअं कंदसि, ॿारनि खे कीअं पाईंदसि, उन छत जो बंदोबस्तु कीअं कंदसि, त पोइ ज़ाहिर आहे हुनखे इहो फ़ैसिलो ईअं ई करिणो पियो हूंदो, कुझु दॿाउ। उहा सही ॻाल्हि आहे। तव्हां मतिलबु उनजो घर ॾिसंदो तव्हां त वेहा उहो कंपाउंड पूरे में हिकिड़ो कमरो ठहियलु आहे, जंहिंखे छत में जेको प्लास्टिक जो टुकड़ो थींदो आहे उहा लॻल आहे। हा, हिकिड़े कमरे वारी उन छत में उहा औरत अकेली, जंहिंजो गुज़रान शादी खां अॻु में इहो हूंदो त हुनजी भेण बि अञा ताईं या ॿियो सॼो ख़ानदान आहे, उहो घरनि में जेको आहे सो मज़दूरी करे ठां ॿुहारी करे कंदा हुआ। हाणे उन औरत खे असां चऊं त बाबा तूं हेॾे सॼे निज़ाम सां जेको उन सां विड़ ऐं वेठा असां फरमाइशूं करे हुन सां गॾु न हुजूं, हुनजी माली मदद बि न करियूं। सही ॻाल्हि। ऐं फेसबुक ते जो पासो हुनखे मायरूं ॾियूं, तूं हेड़ी आहे, तूं कूड़ी आहे। मां केतिरियूं उन्हनि जूं दोस्तनि जूं वीडियोज़ ऐं उहे ॾिठा जेके इल्ज़ाम पिया ॾियनि शीरी ते। मां सम्झां थो हुनजे हथ में छा हुयो, हुन वटि चॉइस कहिड़ी हुई? सही, इहा ई चॉइस हुई त हू पंहिंजे, तव्हां वारी ॻाल्हि त पंहिंजे बचनि जे लाइ सोचे, उन्हनि जो मुस्तक़बिल सोचे। हाणे वधीक छा करे सघे? हुन सां जॾहिं वकीलनि जी का टीम कोन हुई, हुन सां हुनखे जॾहिं को शेल्टर कोन हुयो, हुनखे तहफ़ुज़ कोन हुयो इवन पंहिंजी जान खे। सही ॻाल्हि आहे। सो अहिड़े निज़ाम में रहूं था जिते ताक़तवर जेको आहे उहो आसानीअ सां इहे सभु मरहला तय करे उहो समूरी शयूं, हालांकि केस तमामु मज़बूत हो छो त उहो उन्हनि जे फार्म हाउस तां लाश मिलियो हुयो। सही ॻाल्हि आहे, सही ॻाल्हि आहे। ऐं हुन में तमामु घणियूं शादियूं हुयूं। हा, बिल्कुलु ईअं आहे, पर उन सां गॾोगॾु हिन अहिड़नि फ़ैसिलनि जे अचण सां पोइ वरी अहिड़ो निज़ाम अञा वधीक मज़बूत बि बणिजियो वञे अदा निसार। उनजो जेको सोसाइटी ते असरु आहे, हीअ त खणी हीअ केसिस असां ॿिए तरीक़े सां ॾिसूं था, पर इन जा असरात वरी देरि ताईं हलनि था न उन पूरे पासनि ते, ॿियनि पासनि ते। इन में ॿ केस जेके हाईलाइट आहिनि, हिकिड़ो असां वटि शार्क जतोई जो केस आहे। हा, तव्हां ॾिसो उहो शहरी जेको आहे न माहौल जो केस आहे, उन्हनि खे माइटनि बख़्श करे छॾियो आहे, उनजे बावजूदि हू माण्हू आज़ादु नथो थी सघे। सही, बख़्श करे हुननि जेके आहे न दयत जा पैसा वठी छॾिया। सही, पर ऐं उहो शायदि उन्हनि जी फैमिली फॉरेन हली वई आहे। सही, पर उनजे बावजूदि तव्हां ॾिसो त निज़ाम सिस्टम हुननि कानून तौर ते अहिड़ो कयो जो ऐं आईंदह जे लाइ को बि माण्हू उते, को बि बासर माण्हू ज़रूरत न कंदो त कंहिं बेगुनाह खे क़त्ल करे शहर में। सही, बहिराड़ीअ में माहौल इहो आहे त सभु को हाणे इहा ई ॻाल्हि करे साईं ॾिठा आहिनि बाबा, हला हाणे सरदारनि सां केरु पिटाईंदो त पोइ उनजो हशर इहो ई थींदो। सही ॻाल्हि आहे। त पोइ माण्हू माना इहो तव्हां वारी ॻाल्हि त सोच मज़बूत थी थिए त बाबा जेको ॾाढो आहे ताक़तवर आहे उन सां उचाइणो न आहे, उन सां फिटाइणो न आहे। छो त अॻे पोइ जेका ऐसा कानून हुजे, अदलिया हुजे, इंतिज़ामिया हुजे, अॻे पोइ जीत उन्हनि जी थींदी। अच्छा, इन जे करे ख़बर अथव निसार भाउ, जेके वॾा इदारा आहिनि, आलमी इदारा आहिनि जेके ख़ासि तौर ते वाइल्ड लाइफ जे लाइ कमु कनि था, जेके वाइल्ड लाइफ खां अलावा कमु कनि था, उन्हनि ते बि इहो सवाल या निशान आहे त जेकॾहिं वाइल्ड लाइफ जे लाइ केरु करे थो, मां सिर्फ़ु क़ौमी इदारनि जी ॻाल्हि नथो कयां, पर हीअ इंटरनेशनल लेवल ते वियो त के परदेसी पखियुनि जे लाइ हुन हिकिड़े नायाब नसुल जे लाइ हू पाण विढ़ियो, पंहिंजी जान कई, हुन सां छा थियो, त उहे इदारा बि सुतल रहिया। पोइ असां सिर्फ़ु पंहिंजनि इदारनि ते आङुर नथा खणी सघूं, आलमी इदारा बि सुतल रहिया हिते हिन में, त इहे सुवाल उते बि उथनि था। इहो अॼु त भले सभई माफ़ु करे छॾनि हिनखे या विसारे, पर इहो विसरंदो कोन्हे, तारीख़ हिन जी गवाह रहंदी, पोइ इन्हनि इदारनि ते पाण सवाल या निशान आहे। जी हा, बिल्कुलु, जेके आलमी इदारा आहिनि जेके हूअं त जिते किथे जेको आहे सो उहो दांव कनि था, पर हिन जे लाइ शायदि प्रॉपर तरीक़े सां हितां ई पाकिस्तान मां को केस ई अहिड़ो न ठही सघियो या ख़ुदि आलमी इदारनि जी का टीम ई न पहुती त जेका जांच करे त बाबा हीउ जेकॾहिं माहौलियात जे तहफ़ुज़ लाइ थियो आहे, मर्डर थियो आहे, त उनजा सबब कहिड़ा आहिनि ऐं उनजे केस खे कीअं परज़ू कजे, उनजी पैरवी या पोइवारी कीअं कजे। सही ॻाल्हि आहे। त उहे इदारनि ते बि आङुर खॼी रहे थी, ऐं ज़ाहिर आहे उहे आलमी इदारा पाण हाम हणनि था त असां माहौल जे तहफ़ुज़ लाइ पतो ॾियूं था या खोड़ था करियूं। सही ॻाल्हि। पोइ जेको माण्हू उन्हनि लाइ शहीद थी थो वञे त घटि में घटि उनजी त जेका न पोइवारी उन्हनि जी वापसी त थियणी घुरिजे। सही, वरी महिरबानी निसार भाउ, लख महिरबानियूं, तव्हां अपडेट कयो ऐं बिल्कुलु सचाई ते मबनी तव्हांजी जेका तजुर्बो बहितरीनु, वॾी महिरबानी। ऐं दोस्तो, उन सां गॾोगॾु असां वटि हींअर मुल्की सूरत हाल बि मटिजंदी रहे थी, वक़्तनि फ़वक़्तनि ख़बर न आहे त कंहिं महिल कहिड़ी पार्टी कंहिंजो ऐलान करे थी, पर तक़रीबन शयूं फाइनलाइज़ थी चुकियूं आहिनि
ऐं आचर ताईं ख़बर पइजी वेंदी त ईंदड़ मुल्क जूं वागूं केरु संभालींदो, साॻिया संभालींदा या के ॿिया ईंदा, या मुल्क वञे थो तमामु जल्दी आम अवाम ॾे, तव्हां असां ॾे ईंदो जेके 22 करोड़ अवाम आहियूं। मां हिकु दफ़ो पंहिंजे फेसबुक जे स्टेटस ते इहो लॻायो त जेकॾहिं 22 करोड़ अवाम जी ॻाल्हि केरु इहे कनि जेके सियासतदान आहिनि, त महिरबानी मुंहिंजो नालो हुन में शामिलु न कजो। सची ॻाल्हि आहे त जॾहिं असां वटि अवाम जी राय तव्हां असांजे साम्हूं आहे त उहो छा थींदो, मुल्क जी सूरत हाल केॾांहुं वेंदी त कुझु चई नथो सघिजे। पर बहरहाल हींअर अपोज़िशन हुजे, PTI हुजे, पीपल्स पार्टी हुजे, JUI हुजे, या मुस्लिम लीग नून हुजे, या MQM हुजे, या ॿियूं पार्टियूं जमायतूं जेतिरियूं बि आहिनि बाक़ी पाकिस्तान में कमु कनि थियूं, उन लाइ मुल्की सूरत हाल बदिलिजे पई ऐं उनजे लाइ जेको बहितरीनु असांजो तजियो आहे ऐं ॾाढो पंहिंजाइप वारे अंदाज़ में असांजे हिन प्रोग्राम में ख़ासि तौर ते ज़ुल्फ़कार ॿुधाईंदो आहे, पोइ असां पोइ सोचींदा आहियूं ऐं उन ते गौर कंदा आहियूं। त हींअर ज़ुल्फ़कार गुरहमणी इस्लामाबाद मां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़ुल्फ़कार भाउ। गुड मॉर्निंग फैज़ान। कीअं थी आहे मॉर्निंग? लाड़काणे में त ॾाढी गरम मॉर्निंग आहे, इस्लामाबाद जी हूअं थधी आहे हूअं गरम आहे, कीअं? इस्लामाबाद जी सियासी मौसम हमेशह गरम रहंदी आहे। पोइ भले दिसंबर हुजे या बर्फ़बारी हलंदी हुजे ॿाहिरि, पर अंदरि सियासी मौसम गरम हूंदी आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु, बसि सूरत हाल इहा आहे त वज़ीर आज़म क़ौम खे ख़िताब बि करे चुको आहे। हाणे जेका सूरत हाल तव्हांखे पाण खे सम्झ में अचे। हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे न, असां अॻु में हाणे ताईं चवंदा आहिनि काशे मथे उछलाए बि आहे, चओ बाबा जंहिंखे लॻे मूं ते न आहे। हा, सो वज़ीर आज़म क़ौम खे ख़िताब करे छॾियो आहे, सो हाणे सूरत हाल सम्झण वारनि ते आहे, उहे सम्झी वेठा आहिनि त सभई पासा त हाणे थियणु छा पियो वञे। ओवरऑल मुल्की पॉलिसी हुजे या इक़्तिदारी, सॼी अपोज़िशन हिकिड़े पासे आहे। ऐं ओवरऑल छा था ॾिसो, आचर ताईं मतां बि हींअर मुंहिंजे ख़्याल में त 90% त शयूं वाज़े थी चुकियूं आहिनि ज़ुल्फ़कार भाउ। हा, आख़िरी ऑप्शन ताईं सूरत हाल वञी पहुती न त वज़ीर आज़म खे इहो बि चयो वियो त इस्तीफ़ा ॾियनि। बिलावल भुट्टो जो तव्हां ॾिठो हूंदो पैगाम, त हुन चयो त ठीकु आहे, वज़ीर आज़म जे लाइ इहो बहितर आहे त इस्तीफ़ा ॾिए। त सूरत हाल आख़िरी ऑप्शन ताईं आई। माना तव्हां ईअं चई सघो था त हिकिड़ो जेको मुक़ाबिलो हिकिड़े पासे बनी गाला या वज़ीर आज़म हाउस हो, त ॿिए पासे सिंध हाउस जी सूरत हाल ई। त जॾहिं आख़िरी वक़्त में राति जो डिनर थियो सिंध हाउस ते, त उते 196 खां वधीक मेंबर थी विया, यानी आमिर लियाकत वारा, मुनरिफ मेंबर, जेके रहिया पिया मेंबर PTI जा हुआ, उहे बि सिंध हाउस अचणु शुरू थी विया। त उन खां पोइ इमरान खान वटि ऑप्शन रहिया कोन। MQM राति जो 2 वॻे तक़रीबन ऐलान कयो। ऐं इन खां अॻु तव्हां ॾिठो त चौधरी परवेज़ इलाही सिर्फ़ु उहो शख़्स हो जे वज़ीर आज़म इमरान खान सां सोबे वज़ीर आला पंजाब जी शर्त ते उन हिमायत जो ऐलान कयो। पर बाक़ी जेकी हुनजा हिमायती हुआ, बाप पार्टी हुई ऐं उन खां पोइ MQM खां पोइ मुनरिफ मेंबर, उन्हनि खुलियल तरीक़े सां अपोज़िशन जी हिमायत कई। त जेका अक्सरियत हुई इमरान खान वटि, ऐं उन खां पोइ अक्सरियत विञाइजी वई, त उन वटि ऑप्शन इहो हुआ त मां धरणो हणंदुसि। त उनखे इजाज़त ॾिनी वई त असां परेड एवेन्यू ते वञी जलसो कयो। जलसे खां पोइ आख़िरी सूरत हाल इहा हुई त ही जेकी परवेज़ इलाही मुदा ईंदो त उहो को हिकिड़ो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कंदो ऐं मां बची वेंदुसि। त उहा वरी कुर्बानी ॾियणी पई उस्मान बुज़दार जी, त उहा कुर्बानी बि घणो कमु न आई। हाणे आख़िरी जेको इहो त वज़ीर आज़म चयो त मूंखे क़ौम सां ख़िताब करिणो आहे, त उहा सूरत हाल बि हिकिड़ो ॾींहुं मुलतवी कई वई त सुभाणे क़ौम सां ख़िताब कबो। जॾहिं क़ौम सां ख़िताब जो वक़्तु आयो त उनखे रिकॉर्डेड जे बजाए चयो, वज़ीर आज़म चयो त मां लाइव कंदुसि। त लाइव वारी सूरत हाल आई, त उन में बि इहो उन में जेको फंबल थियो या कयो वियो या थी वियो, पर बहरहाल शयूं वाज़े त थी चुकियूं। हा, त हाणे जेको वज़ीर आज़म इन सॼे मामले में बयानियूं ठाहिण जी कोशिशि कई पए, त जंहिंखे बिलावल भुट्टो बि चयो पिए त रुगो जीअं भुट्टो जो हुन नारो न हुयो, पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थियण जी कोशिशि कई। त हुन आख़िरी वक़्त में अमेरिका जो नालो, अमेरिका तरफ़ां ख़त ऐं मुंहिंजे ख़िलाफ़ आलमी साज़िश मौजूदा जेके अपोज़िशन वारा आहिनि उहे उन्हनि जे हथनि में खेॾनि था। उन वज़ीर आज़म पंहिंजे पूरे ख़िताब में उहा कोशिशि बि कई त को आवाम खे पाण ॾांहुं मुतहरिक करे, पर मुंहिंजे ख़्याल आहे त उहे सभु जेके कार्ड हुया वज़ीर आज़म जा उहे पूरा थी चुका। ऐं हाणे इहो आहे त तव्हां ॾिठो त स्पीकर जो जेको किरदारु उहो बि हो त उहो डिले कंदो रहियो त अदम एतमाद जी तहरीक ते वोटिंग में लेट थिए, त जीअं वज़ीर आज़म खे वक़्तु मिले उन सां को हुनखे फ़ाइदो थिए। पर उहो किथे बि कार्ड वज़ीर आज़म हलंदे नज़र न आया आहिनि। हाणे बसि इहो आहे त आचर ते वोटिंग थींदी ऐं वोटिंग थियण खां पोइ सूरत हाल, फ़िलहाल त सूरत हाल इहा आहे त वज़ीर आज़म वटि अक्सरियत ख़तमु थी चुकी आहे।
बहरहाल पोइ हाणे मूंखे त इहो थो लॻे त जेके ॿिया मेंबर आहिनि PTI जा उहे बि न आपट कनि हा बिल्कुलु थींदो ईअं ई आहे त जेके रहिजी विया जेके हुननि चयो त हाणे असां वटि बाक़ी इहो थोरो टाइम बचियो आहे ईअं न त इहो बि हलियो वञे पर मुंहिंजे ख़्याल सां त जेका अपोज़िशन आहे अपोज़िशन वटि अक्सरियत अची वई आहे जीअं हाणे काल्ह ताईं ॻाल्हायूं पिया त MQM चयो पिए त असां या त वज़ीर आज़म ठाहींदा आहियूं या वज़ीर आज़म ड्राईंदा आहियूं त हींअर बि उहे क्लेम कनि था त असां शहबाज़ शरीफ़ खे बि जेकॾहिं वज़ीर आज़म करिणो आहे त उहे असां करे सघूं था इमरान ख़ान खे बि असां वज़ीर आज़म कयो या लाहियूं था त असां ई लाहियूं था पर हींअर MQM खां अलावा बि जेके मुनरिफ़ मेंबर आया आहिनि 172 जी ज़रूरत हूंदी आहे हींअर 200 खां वधी विया आहिनि त अहिड़े क़िस्म जी जेका सूरत हाल आहे बार्गेनिंग पोज़ीशन जी उहा हाणे रही न आहे पर MQM बहरहाल MQM पंहिंजा जेके एग्रीमेंट आहिनि उन ते साइन कराए छॾिया आहिनि त हींअर सूरत हाल इहा आहे त अपोज़िशन खे वधीक महिनत करण जी ज़रूरत कोन्हे सिर्फ़ु आचर जो इंतज़ारु आहे त हिकिड़े स्मूथ वे में वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ अदम एतमाद जी तहरीक जो मरहलो मुकमल थिए नओं वज़ीर आज़म साम्हूं अचे न पर हींअर हिकिड़ो इहो बि त पैगाम अचे पियो त मूंखे सेफ एग्ज़िट मिले जीअं मुशर्रफ साहिबु चयो तीअं ई हींअर हिननि बि इहा ई डिमांड कई आहे जेको हले पियो त भई अपोज़िशन खां त मूंखे सेफ एग्ज़िट मिले तव्हां हिनखे छा था ॾिसो ॾिसो हिकिड़ो वज़ीर आज़म जलसे करण जी जेका कोशिशि कई त हुन सां अवामी ताक़त ज़रिए सूरत हाल खे पंहिंजे तरफ़ तब्दील करण जी कोशिशि कई त वरी उन में इहा ख़त वारी सूरत हाल साम्हूं आई त इहा बि हिकिड़ी फ्यूटाइल एक्सरसाइज़ वज़ीर आज़म जी सम्झ में आई त माना हुनजो दॿाउ पइजी वियो त हाणे उहो ख़त ॾेखारियो या उन मुल्क जो नालो खणो हाणे अपोज़िशन चयो त ठीकु आहे तव्हां ख़त जो ज़िक्र कयो आहे त हाणे इहो मसइलो इमरान ख़ान जो न आहे मुल्क जो मसइलो आहे त असां बि तव्हां सां गॾु आहियूं ख़त आणियो वज़ीर आज़म सीनियर साहिब खे घुरायो त तव्हां ख़त ॾेखारियां थो बाद में वज़ीर आज़म खे ॿुधायो वियो त ईअं नथो थी सघे ऐं बाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो इजलास घुराइण जो मुतालबो थियो त उहो इजलास घुरायो वियो त हाणे उन में बि उन ख़त जो ज़िक्र साम्हूं आयो आहे या उन ते इजलास बि थी चुको त हाणे उन खां अॻु में जेकी मीटिंग्स थियूं इन हवाले सां त उन खां पोइ हिते असां हिकिड़ी सूरत हाल इहा ॾिठी त अचानक हंगामी इजलास जेकी अपोज़िशन जा मरकज़ी लीडर हुआ जॾहिं आसिफ ज़रदारी शहबाज़ शरीफ़ बिलावल भुट्टो मौलाना फज़ल रहमान ऐं ॿिया उन्हनि जो सिर्फ़ु अॻुवाणनि जो इजलास थियो ऐं उन में इहा ख़बर साम्हूं आई त वज़ीर आज़म सां जेके मिलिया आहिनि उन्हनि खे वज़ीर आज़म चयो आहे त मां इस्तीफ़ा न ॾींदुसि हिकिड़ो महफ़ूज़ रस्तो ॾियो त हाणे जेकॾहिं अपोज़िशन वारा महफ़ूज़ रस्ते जी उहा शर्त मञनि पिया यानी अदम एतमाद जी तहरीक वापसि वठनि ऐं कुझु ॾींहंनि खां पोइ वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा ॾेई ऐं असेंबलियूं डिज़ोल्व करे त हिन जो त हिकिड़ो मक़सदु इहो हो त अदम एतमाद जी तहरीक वापसि वठी ऐं अपोज़िशन वारा पंहिंजो जेको सॼो माहौल जुड़ियल आहे उनखे ख़तमु कनि क़ौमी असैम्बली जो इजलास मुलतवी थिए त सुभाणे जेकॾहिं वज़ीर आज़म असेंबलियूं डिज़ोल्व करे त हिन जो मक़सदु आहे त वज़ीर आज़म जेको कुझु ॾींहं अॻु ताईं उन वटि इहो ऑप्शन हुयो त असेंबलियूं डिज़ोल्व करे उन पाण उहो कार्ड न खे ॾियो ऐं अदम एतमाद जी तहरीक ताईं मामले खे वठी आयो त अपोज़िशन छाजे करे वापसि वेंदी उन पुराणे कार्ड ते ऐं जेकॾहिं उन खां पोइ सूरत हाल खां तब्दील थिए त ॿीहर अपोज़िशन जो इतमाद जुड़े हले न जुड़े त इहा हिकिड़ी शिकस्त आहे अपोज़िशन सम्झे अपोज़िशन वारनि इहो सम्झो त जेकॾहिं असां पोइते वेंदासीं त सुभाणे असांखे वरी अॻिते अचण में ॾुखियाई थींदी जी जी वॾी महिरबानी ज़ुल्फ़कार भाउ टाइम तव्हांखे ख़बर आहे न्यूज़ जो पियो थिए ॾिसो पाण वरी इंशाल्लाह राब्ते में रहंदासीं इंशाल्लाह ताला वरी महिरबानी तव्हां अपडेट कयो लख महिरबानी अदा निसार खोखर सां ही जेको नाज़िम जोखियो जो केस हुयो उन ते पंहिंजी डिस्कस थी उन खां पोइ इस्लामाबाद जा इशूज़ ऐं मुल्की सूरत हाल सियासी सूरत हाल स्पेशली त उहा केॾांहुं पई वञे छा थिए पियो उन में ख़िताबात हुजनि अपोज़िशन जो हिकिड़े पासे गॾु थियणु हुजे या हुकूमत जूं हींअर सरतोड़ कोशिशूं हुजनि पंहिंजी हुकूमत खे बचाइण जे लाइ पर बहरहाल हींअर हक़ीक़तूं साम्हूं ईंदियूं वञनि पियूं मुल्की हालात कहिड़े पासे वेहंदा उहे नज़र ईंदा पिया वञनि पर उन लाइ असांजी दुआ आहे त शल बहितर थिए ब्रेक खां पोइ असां वटि हिकु अॼु महिमान आहे ॾाढी ज़बरदस्त छाकाणि त असां वटि हमेशह असां चवंदा आहियूं त जेको एक्सपोजर आहे इंसान जो उहो हमेशह काउंट थींदो आहे माण्हू घुमे थो फिरे थो ॾिसे थो परखे थो ऐं पोइ उनखां पोइ पंहिंजो तजियो पेश कंदो आहे त मूं छा ॾिठो मूं कीअं ॾिठो ऐं उनजे ॾिसणु तजियो पेश करण खे पोइ वरी दुनिया जहान नोट कंदी आहे त केतिरो सच पियो लिखे केतिरो वज़नाइतो पियो लिखे हिन जो परखणु कीअं आहे तीअं वरी इदारा आहिनि तीअं वरी माण्हू आहिनि शख़्सियतूं आहिनि सो अॼु जेका असां वटि महिमान शख़्सियत आहे उनजो तालुक़ु त असांजे लाड़काणे सां पर पढ़ाई उन्हनि सरकारी स्कूलनि ते उन्हनि फिकनि ऐं नीरनि कपिड़नि सां असां वटि असांजूं न्याणियूं पाईंदियूं न नीरो चोलो अछी शलवार तीअं असां वरी फिका कपिड़ा पाईंदा हुआसीं त उन्हनि स्कूलनि में उन्हनि बेंचुनि ते उन्हनि स्लेटुनि ऐं पटियुनि ते
पोइ आस्ते आस्ते वक़्तु चेंज थींदा विया, आस्ते आस्ते स्कूल्स डिफरेंट थींदा विया, शहर मुख़्तलिफ़ थींदा विया, एक्सपोजर डिफरेंट थींदो वियो। त जॾहिं केरु माण्हू पंहिंजी इन ते पहुची वञे त पोइ पे बैक कंदो आहे सोसाइटी खे। जीअं कल्ह असां अदा नासिर सां ॻाल्हायोसीं पियो, तीअं अजमेर मां जेका असां वटि डॉक्टर अदी आहे उहा पढ़ी त असांजे शहरनि मां आहे पर मुख़्तलिफ़ एक्सपोजर सां। हाणे असांजी कोशिशि आहे त उन्हनि नियाणियुनि खे उन्हनि भाइरनि खे ख़बर पवे जेके चाहिनि था त असां छा कयूं, छा करणु खपे। उन लाइ असांजो हीउ प्रोग्राम हिकु लाट वांगुरु साबित थियण जी असां कोशिशि कंदा आहियूं त जीअं लाट थी साम्हूं अचे, कंहिंखे मन उन मां कुझु मिले। सो अॼु असांजी मौज़ूद महिमान आहे PhD डॉक्टर ऐं चार्टर अकाउंट्स जेको आहे सो सभिनी खे रॉकेट साइंस नज़र ईंदो आहे त ॾाढो ॾुखियो आहे, केरु कंदो, इहो मैथमेटिक्स आहे, इन में जेको आहे सो कहिड़े तरीक़े सां हिननि जी कैलकुलेशन्स आहिनि, फार्मूलाज़ आहिनि, इहो त ॾाढो ॾुखियो आहे। पर हमेशह शयूं तेसि ताईं ॾुखियूं हूंदियूं आहिनि जेसि ताईं ईंदियूं न आहिनि, जॾहिं अची चुकियूं आहिनि पोइ आसान थींदियूं आहिनि। अॼु असांजी मौज़ूद महिमान आहे डॉक्टर हुमा सोडर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर आप, ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर हुमा के काफ़ी साल थियनि त पंहिंजे नेटिव प्लेस ते हू न आहिनि, पढ़ियूं त आहिनि पर ज़ाहिर एक्सपोजर ॿाहिरि जो आहे त इंग्लिश ऐं उर्दू ॻाल्हाईंदियूं आहिनि, त इन करे लैंग्वेज डिपेंड कंदी आहे प्रैक्टिस ते आहे। त सोडर आहिनि असांजे लाड़काणे जो आहिनि पर हाणे ज़ाहिर एक्सपोजर लाड़काणे जी मुंहिंजी प्राइमरी एजुकेशन आहे। तव्हां ॿुधायो त लाड़काणे में स्टेशन रोड जे पोइ ते असांजो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हो, उन में बि उन में सरकारी स्कूल में मां पंहिंजी बिगिनिंग मुंहिंजी उन ई स्कूल जी आहे। अच्छा डॉक्टर हुमा, तव्हां सरकारी स्कूल में पढ़ियो, पोइ किथे किथे वियो, छा कयो, थोरो पंहिंजी स्टोरी ॿुधायो ताकी हिकिड़ी सक्सेस स्टोरी आहे त असांजे ॾिसण वारनि खे ख़बर पवे। मुंहिंजे में तव्हां ईज़ी हुजो, सिंधी में या उर्दू में। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो बिगिनिंग थी वो तो लाड़काने में सरकारी स्कूल से हुई, फिर आगे कराची में ऑनवर्ड्स सेकेंडरी एजुकेशन से, फिर आगे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू किया। एंड सबसे ज़्यादा जो मैं इसमें आपको और अपनी पर्टिकुलरली ऑडियंस को बताना चाहूँगी वो ये बताना चाहूँगी कि आप ये सोचते हैं कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वसाइल चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। अगर आपने कोई भी किसी भी शोबे में कोई कामयाबी हासिल करनी है, उन वसाइल की, उस गाइडेंस की, उस रहनुमाई की ज़रूरत होती है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपकी अपनी हार्ड वर्क की, परसिवियरेंस की। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड बी नेसेयर्स जो कहेंगे कि कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते। जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आई थी, पीपल यूज़ टू लाफ एट मी एंड दे यूज़ टू से कि ये 20 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता है, लड़कियों के बस की बात नहीं है, बाबा मास्टर थे, डॉक्टर हो जाएं, आप टीचर बन जाएं, दैट इज़ फॉर लेडीज़। लेकिन अगर आप में जज्बा हो, आप में मेहनत हो, लगन हो और अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी आप पर हो तो आपका रास्ता कोई रोक ही नहीं सकता। देर हो सकती है आपको, लेकिन आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। तो कहाँ कहाँ आपने देर कर दी और कैसे कैसे मंजिल पे पहुंची, ज़रा हमें भी बताएं। जी जी, जैसे फॉर इंस्टेंस जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का अपना जर्नी स्टार्ट किया था तो उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिले। फिर इसके बाद मुझे अभी बल्कि इस साल अगेन मैं कहती हूँ कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और मेरी अचीवमेंट्स और सब चीज़ों को देखते हुए और मेरी स्ट्रगल्स को भी मेरे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान जो कि एक ऐसा इदारा है जिसके 10,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं पाकिस्तान और बाहर ममालिक मिला के जो काम कर रहे हैं। और उसमें तो उन्होंने मुझे वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड भी दिया। और इसके साथ साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ ही मैंने लॉ की एजुकेशन भी परस्यू की। सो आई एक्चुअली प्रैक्टिस एज अ बैरिस्टर। मैं लंदन में ये जो क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अकाउंट्स का भी पता होना चाहिए, आप लॉ का भी जी लॉ का भी पता होना चाहिए, आप सब चीज़ें देख सकें। तो वो मैंने ये की। इसके साथ साथ जब मैंने क्योंकि जब मैंने कोर्टों में मैंने कुछ लिमिटेड अरसे के लिए मैं जज भी थी, तो जब मैंने कोर्टों के मसाइल देखे और इसके अलावा पर्टिकुलरली किसी भी सोसाइटी के और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो हमारे मसले सोशियो इकोनॉमिक हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन मसलों की तरफ देखना है तो फिर उसका हमारे इन तमाम मसाइल को मैंने कहा ये मैंने तमाम तालीम हासिल की है, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है, तो उन मसाइल के लिए हल क्या होना चाहिए। तो उसकी बेसिस पर ऑल्दो मैंने रिसर्च तो यूके के पर्सपेक्टिव में की, बट आई थिंक वही इसी तरह के मॉडल्स पाकिस्तान के लिए रेप्लिकेट किए जा सकते हैं। तो उसी में मुझे फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी स्कॉलरशिप मिला। मेरी PhD जो है वो भी फुल्ली स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप की फुली फंडेड थी स्कॉलरशिप मुझे मिला। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फिर मुझे रिसर्च फेलोशिप मिली, वहाँ भी स्कॉलरशिप था। फिर मुझे मलेशिया में इसरा एक इंटरनेशनल शरिया रिसर्च एकेडमी है, वहाँ भी तो आपको असर तो मुझे मलेशिया का ज़्यादा लग रहा है आप पर, खैर प्लीज़ करिए। जी 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 सो दैट्स व्हाट आई वुड से। और फिर इसके बाद इसके साथ साथ क्योंकि मैं काम भी कर रही थी तो वेदर वो रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस हों या इसके अलावा कोई ट्रेनिंग कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स हों, तो उसके हवाले से फिर मुझे मुख्तलिफ दुनिया में जो अक़वाम हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला और उनसे सीखने का मौका मिला। जैसे आप टर्किश, आई हैव वर्क विद आई मीन टर्की है, मलेशिया, US, UK, बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड देन हमारे जो GCC कंट्रीज़ हैं जिसमें कतर, अबू धाबी और रशियन स्टेट्स में जैसे काज़िस्तान आ जाता है। तो या आप अपनी यूरोपियन अक़वाम में, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्विस कौम का मैं या मुख्तलिफ अक़वाम का इसलिए जिक्र करती हूँ क्योंकि आजकल अगर हम अपने यूथ को देखें तो मुझे एक चीज़ जो नज़र आती है वो ये कि हम एज अ कौम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इट फोकसेस ऑन यू, ये आपके ऊपर ज़्यादा वो करता है, आपको एक प्रोफेशनल बनाता है। एज अ कौम हम एक कामयाब कौम का जो हिस्सा है वो नहीं बनाता। आप में सिविक सेंस नहीं है, आपको एक एजुकेशन मिल गई, अब आपके पास एक पावर आ गया, प्रोटोकॉल आ गया, सारी चीज़ें आप सिग्नल्स तोड़ दें, सब चीज़ें छोड़ दें, कचरा फेंक दें और आप चले जाएं। सही। अब तो ये हमारा सिस्टम है, इससे चलता है, दुनिया के अलग अलग सिस्टम से हम उसको मानते हैं, जाते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर हुमा, एक लाड़काना की लड़की, जिस तरह से आपने कहा, अपने उसी दड़ी मोहल्ले की लड़की, उसी एजुकेशन को लेके, तो एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले कुछ बेहतर था जो गवर्नमेंट लेवल का था, अब तो सवाल या निशान है, एक्सपोजर डिफरेंट है। तो चैलेंजेस कौन कौन से सामने करने पड़े, चैलेंजेस के आपको जो अभी भी आप समझती हैं कि उसमें आसानियां हैं या कोई और आए तो उसको बेहतरी नज़र आएगी? जी, चैलेंजेस तो जैसे आपने खुद आइडेंटिफाई किया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो सरकारी स्कूलों में फॉर इंस्टेंस, जब मुझे आज भी याद है कि कुछ क्लासेस में अगर कोई बच्चा या बच्ची, अगर हम कोई क्वेश्चंस करते थे सो दे वर नॉट वेलकम। आपकी क्रिएटिविटी या बच्चा कोई सवाल करना चाहे या कोई चीज़ समझना चाहे तो वो वेलकम नहीं किया जाता था, बल्कि आपको एक डांट लगाई जाती थी कि आपने सवाल नहीं करना। जबकि एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम वो होता है जो आपकी सलाहियतों पे काम करता है, हर बच्चे में एक डिफरेंट टैलेंट है, ठीक है, उस पर काम करता है। तो एनीवेज अगर आप जहाँ तक बात करें कि अब ये जो हमारी जनरेशन आ रही है वो क्या कर सकती है, तो मैं समझती हूँ कि आई थिंक एक बेनिफिट भी है इसी चीज़ का और इसी चीज़ का एक डाउन साइड भी है, टेक्नोलॉजी। सही, ठीक है, टेक्नोलॉजी को तो हम बेनिफिट ही ले सकते हैं या डाउन उसमें भी जा सकते हैं, दोनों साइड्स पे। हाँ, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो खुद पे डिपेंड करता है ना कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हम लाइब्रेरीज जो है वो हम इस्तेमाल करते थे, या अपने अगर स्कॉलरशिप्स भी या कोई भी चीज़, ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी चले गए, लोकल लाइब्रेरी सिटी में चले गए, उनमें बुक्स पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। अब नाउ इट इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। सही, आपने क्लिक किया, अगर इट्स अप टू यू कि आप म्यूजिक चार्ट्स में टॉप ट्रेंडिंग गाना ढूंढना चाहते हैं, उसकी पायरेटेड कॉपी, या गेम ढूंढना चाहते हैं, या आप अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश अप करने के लिए कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं, आप कोई नई स्किल उससे सीखना चाहते हैं, आप कोई अपना नया स्कॉलरशिप ढूंढना चाहते हैं, आप अपने नए एवेन्यूज़ ढूंढना चाहते हैं। इट्स अप टू यू हाउ डू यू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि अनफॉर्चुनेटली उस सोशल मीडिया, और हमारे मुल्क में भी मैं ये समझती हूँ कि हमारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, मीडिया, इदारे, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, इन सब का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो आगे हमारी आने वाली यंग जनरेशन है उनको उस जहाँ उस सोशल मीडिया के अब्यूज़ की वजह से, आप देखिए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन, ये पहले इतना कॉमन नहीं था। हाँ, जैसे मीडिया तो ज़्यादा, उसी टिकटॉक का अब्यूज़, उसी टिकटॉक में अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आप यूके में वहाँ जाएं, वहाँ एक लॉ फर्म का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, ठीक है, वहीं से वो ऐप बना के वो लीगल एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, और आप उसी को आपने एक एंटरटेनमेंट, वो भी एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, आपका ओरिजिनल टैलेंट क्या है, एंटरटेनमेंट इज, यू नो, लेकिन उसमें भी एनीथिंग इज बैड, यस, और उसमें भी आपकी क्रिएटिविटी क्या है, सही, आपकी ओरिजिनलिटी क्या है। लेकिन एक्सेसिव जो आपका सोशल मीडिया, वो भी विदाउट एनी मॉनिटरिंग अगर जो यूज़ हो रहा है, उसमें तो हम बिल्कुल आ सकते। अच्छा, जैसे हम चार्टर अकाउंट्स को ले लें, ये
اگر کسی کو شوق ہوتا ہے تو پہلے تو وہ BCom M.Com اور اس چیزوں پہ ہوتے تھے, اس کے بعد پھر ہم نے پھر BBA کرنا ہے, MBA کرنا ہے, پھر ہم تھوڑے ماڈریٹ ہوتے گئے, پھر ہم CA کریں گے اور پھر SCCA کریں گے, تمام چیزیں اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں. یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ابھی بھی ہمیں حیدرآباد کم سے کم, ورنہ کراچی کا سہارا لینا پڑتا ہے, پھر کراچی سے ایبراڈ کا آپشن ہوتا ہے. تو ان کو ہم آسانی سے اپنے چھوٹے چھوٹے شہروں میں کیسے کر سکتے ہیں کہ تاکہ اور لڑکے یا لڑکیاں جو افورڈ کر سکتے ہیں یا جو نہیں بھی کر سکتے تو اسکالرشپ کو لے کے اس فیلڈ میں ایسا کیا ہے آخر؟ جی جہاں تک آپ کا سوال اگر میں جو آپ نے مجھ سے پوچھا تو اس میں جی بالکل, انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو یہ مزید اور کوشش کر رہا ہے کہ مزید جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان کے اندر بھی فار انسٹنس جا کے بچوں کی رہنمائی کی جائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. بٹ اسٹل ہیونگ سیڈ دیٹ بہت سارا اور کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میرا گولڈ میڈل آیا تھا تو مجھے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس مختلف شہروں میں لے کے گیا تھا. وہ سارے انسٹیٹیوٹ مطلب جیسے چھوٹے چھوٹے جس میں اگر پنجاب میں بھی آپ چلے جائیں جو سدرن پنجاب کا ایریا ہے یا آگے فیصل آباد ملتان یا اس سائڈ پہ آپ ادھر چلے جائیں تو جہاں کے لوگ سوچتے تھے یا اس میں پاکستان کے مختلف شہروں میں کہ جہاں اسٹوڈنٹس کا خیال یہ تھا کہ ہم سے یہ ایگزام پاس نہیں ہوگا. سو دین دے پریزنٹڈ می کہ ایک تو یہ خاتون ہیں جو کہ لگتا ہے کہ لیڈیز تو یا لڑکیاں تو کر ہی نہیں سکتی ہیں, اور نہ صرف انہوں نے پاس کیا بلکہ گولڈ میڈل لیا, اور کس طرح سے کیا فوکس پڑھائی کی جائے. اور اب تو آئی وڈ سے کہ ایون انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں ٹھیک ہے تو آپ کو سارے پاس پیپرز اور ساری چیزیں, اور اس کے علاوہ ایون انٹری کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی اس میں کافی گائیڈنس موجود ہے, کافی آسانی کی گئی ہے. لیکن اسٹل میں سمجھتی ہوں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اب یہ بھی ہم آپشنز کر رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے سجیشنز آنی چاہیے اور فردر تاکہ ان پہ کام کیا جا سکے. مینٹرنگ کی ہیں کہ اگر ایگزسٹنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں ان کو آگے اپنے کریئر میں آگے بڑھنا ہے, ان کو کیسے مینٹر کریں. اور اگر اسکول اور کالجز میں بھی جاتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان کے جو ممبرس ہیں, جا کے ان کو گائیڈ کرنا کہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اور ایز آئی سیڈ وین دیر از اے ول دیر از اے وے. صحیح بات ہے. ڈاکٹر ہما سوٹر صاحبہ سا ॻाल्हि بول جاری ہے. ڈاکٹر ہما PhD بہن, بیرسٹر بہن, چارٹر اکاؤنٹس में हुजे या जुडिशरी हुजे या को डिसीशन मेकिंग हुजे, किथे वकालत हुजे, एडवोकेसी हुजे, ऐं मुख़्तलिफ़ एक्सपोजर उन्हनि वटि आहे. ऐं ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं असांजी नियाणियुनि खे कॾहिं मौक़ो मिले थो तो हू परफॉर्म कनि थियूं. डॉक्टर हुमा, आप ज़बरदस्त बात की और ब्रेक में भी हमारी इस चीज़ पे बात हुई. जब हमारी ख़वातीन को, हमारी बच्चियों को, बहनों को जब चांस मिलता है तो वो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन हमारे पास रोका जाता है, तो वो किस तरह से अपना रास्ता निकालें, क्या करें? अगर आपके पास कोई इस तरह का आइडिया हो जो कुछ करना चाह रही, पढ़ना चाह रही, तो क्या करें वो? جی یہ تو میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انفارچونیٹلی ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں, اور پرٹیکولرلی انٹیریئر سندھ کی طرف چلے جائیں یا اوور آل پاکستان میں بھی ہم دیکھیں تو یہ فیکٹ ہے کہ ان کو مختلف قسم کی مزاحمت کا اور آبسٹیکلس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیتے جائیں تو, کیونکہ میرے پاس آج فار انسٹنس جو آپ نے ابھی تعارف کرایا, بہت اگین تھینک یو ویری مچ فار سچ اے گریٹ انٹروڈکشن آپ نے جو میرے لیے مجھے دیا, اور مجھے نہیں اور مجھے اس پروگرام میں یہ اپرچونیٹی دی کہ میں آ کے اپنے لوگوں سے بات کر سکوں, اپنے یوتھ سے بات کر سکوں کہ مایوسی ہمیں نہیں کرنی ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے ہر منزل پہ, فار ایگزامپل جب میں اسکول میں تھی, میں نے آپ کو بتایا سرکاری اسکول سے, پھر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, ہر منزل پہ وہ ادارے, کچھ لوگ آپ کو ملتے چلے جائیں گے. صرف آپ نے ڈھونڈنے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ اپنی فیملی کو بھی کنونس کر رہی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے فار انسٹنس میرے فیملی میں یا اس میں کوئی اپوزیشن نہیں تھی, میں اس معاملے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ ہمارے گاؤں میں, جیسے فار انسٹنس جس گاؤں سے میں بلانگ کرتی ہوں, میں ہی نہیں ہوں بلکہ جیسے میرے جو ہم اسی گاؤں سے ہمارے ارشاد سوڈر صاحب ہیں, ڈاکٹر فائزہ سوڈر ہیں. سو اس میں میرے جیسے دادا ہو گئے, ان کے نانا ہو گئے, تو ان میں شعور تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہ قوم کے لیے, ملک کے لیے, اپنی گاؤں کے لیے کچھ کریں گے. ٹھیک ہے,
لیکن اسی کے ساتھ ساتھ باقی کے گاؤں کے جو دوسرے لوگ یا اور اگر آپ شہر کے دیکھیں تو وہ بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھانے والے تھے کہ آپ اپنی بیٹی کو پڑھا رہے ہیں یا آپ اپنے بچیوں کو پڑھا رہے ہیں تو یہ کچھ صحیح بات نہیں ہے. سو لیکن آپ آہستہ آج آپ کو بھی تو آبسٹیکلز ملے ہوں گے نا, آپ بھی تو اس طرح سے جمپ کیا ہوگا. جی تو ہم نے, مجھے یہ پتا تھا کہ میرے دادا نے جو کانفیڈنس کیا ہے, میرے فادر نے جو مجھ پہ اعتماد کیا ہے, تو اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. تو آج وہی گاؤں اور باقی اس گاؤں سے بھی آگے شہر کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں, وہ ابو سے اور سب سے آ کے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہم کیسے, کیونکہ انہوں نے دیکھا, یہ سیٹسفیکیشن ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو کہا وہ کیا, ہماری بیٹیوں نے کر کے دکھایا, تو ان کے لیے تو بھی پراؤڈ ہے نا. آپ وہ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہما دیکھیں وہ کہاں تک ہے. اس لیے اچھا ڈاکٹر ہما, آپ نے جس طرح سے بیرسٹر بھی ہیں آپ اور تمام چیزیں, تو آپ کا ایکسپوجر خود سے شوق تھا ملیشیا میں بھی کام کرنے کا, یو کے میں بھی, امریکہ میں بھی, اور ادھر بھی آپ کرنا چاہ رہی ہیں جو بھی ہے, یا کوئی گائیڈ لائن کہیں اور سے بھی تھی آپ کو کہ یہ کریں وہ کریں؟ جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ابھی میں نے ابھی دادا کا بھی ذکر کیا, وہ میرے دادا میرے اپنے گھر میں انسپریشن اس طرح سے تھی. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, ایسا نہیں تھا. لیکن میرے دادا نے جیسے مادر ملت فاطمہ جناح کے قریبی ساتھیوں میں سے, قائد اعظم کے پاکستان بنانے والے لوگوں میں سے تھے, تو ان کے پاس ایک ویژن تھا اپنی آگے جنریشن کے لیے. تو یہی کام آج کے پیرنٹس کے لیے, سوسائٹی کے لیے, ان کو اپنے ینگ ٹیلنٹ کو آگے بڑھانا ہے. جہاں تک آپ نے ملیشیا اور اس کی بات کی کہ میں یہ کیسے گئی اور کیسے گائیڈنس ملی, تو میری والدہ بھی جو ہے وہ جج ریٹائر ہوئی ہیں, تو ان سے مجھے قانون کی اور ان سب چیزوں کی انسپریشن ملتی تھی. لیکن آگے انٹرنیشنلی اگر اس کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہر منزل پر جا کے آپ نے, جیسے آج فار ایگزامپل آپ نے ذکر کیا کہ میں نے ترکی, ملیشیا اور یو ایس اے میں ہارورڈ یونیورسٹی کا مجھے اسکالرشپ ملا, یا پھر آپ مختلف ممالک دیکھ لیں, قازقستان یا جو بھی. تو ہر منزل پہ جا کے آج میں جس منزل پہ کھڑی ہوئی ہوں, تو اب میں سوچتی ہوں اس سے آگے میں اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, خاص طور پہ اب میں واپسی میں اپنے اس ملک کے لیے اور اپنے اس علاقے کے لیے, لڑکیوں کے لیے اور یوتھ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں. کالر ہے ہمارے پاس آپ کے لیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لاڑکانہ سے سنم بات کر رہی ہوں. جی. اور جیسے میں نے سنا کہ کوئی ایک نیو ٹیلنٹ ڈاکٹر ہما کا بھی تعلق لاڑکانہ سٹی سے ہے, میں نے صحیح سنا, دری محلہ سے, تو میں نے کہا کہ ضرور ان سے بات کی جائے اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے. کین آئی ٹاک ٹو ڈاکٹر ہما پلیز؟ جی جی پلیز بات کریں. السلام علیکم ڈاکٹر ہما, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ لاڑکانہ نے بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگوں کو جنم دیا ہے, اس دھرتی میں کوئی بات ہی ایسی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں قوم پرست ہوں یا دھرتی پرست زیادہ ہوں, لیکن مجھے آپ کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی, اور آپ کی اچیومنٹس کے بارے میں سن کے بہت خوشی ہوئی کہ باقی چھوٹے سے شہر سے جیسے ہم سمجھتے ہیں ہمیں زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. آئی ایم آلسو فرام لاڑکانہ, کہ اس قوم میں بھی یا کوئی اس قسم کے لوگوں میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہوگا یا وہ بھی باہر آ سکتی ہیں. جی بالکل. تو I'm very impressed, اور مجھے کال کرنے سے مجبور ہو گئی کہ ڈاکٹر ہما کو میں پرسنلی ایک تو بہت سارے مبارکباد دوں اتنی ساری اچیومنٹس کے لیے, اور آپ نے جو کیا ہے چھوٹے سے شہر سے آ کر. کوئی سوال ہو آپ کے پاس پوچھنا تو کائنڈلی ذرا سوال پوچھیں. سوال نہیں پوچھنا, بس مجھے تعریف کرنی تھی ان کی جو بھی آپ نے اچیومنٹ کی ہے, اور ڈیفینیٹلی کوئی ایسا میسج دیں کہ بہت ساری ڈاکٹر ہما اور نکل کے آ جائیں پاکستان میں, سندھ سے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈس. اگین میں یہ کہوں گی کہ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں, میرے پیرنٹس کی اور انسیسٹرز کی محنت ہے, اور اس کے ساتھ میرے اساتذہ کی. وہ مجھے مختلف موڑ پر ملے, کبھی سرکاری اسکول میں ملے, کبھی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں ملے, کبھی ہارورڈ یونیورسٹی میں ملے, کبھی یو کے میں ملے, کبھی کہیں اور ملے. اور اس کے علاوہ بہت سارے, جہاں اس سوسائٹی میں اتنی اپوزیشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں چھوٹے بڑے ہر طبقے میں, جنہوں نے آپ کا ہاتھ تھاما اور آپ کو آگے بڑھاتے لیتے چلے گئے. اور اب میری کوشش ہے جہاں مجھے کالجز میں, یونیورسٹیز میں کہیں پر بھی موقع ملتا ہے, میں صرف, میرا کہنا یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ نہیں سوچنا, اگر آپ اس وقت کسی سرکاری اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا ایون آپ ایک بہت بڑے, جیسے فار انسٹنس آج الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک پوزیشن دی ہے, تو میں اسٹیگننٹ نہیں ہو گئی. میں نے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے بعد میں مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ گئی کہ میری دنیا بس ختم ہو گئی, میں نے سب اچیو کر لیا. کیونکہ جس لمحے
آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ کو سب کچھ مل گیا, آپ کو سب آتا ہے, آپ عقل کل ہیں, سب سے زیادہ علم کا مالک صرف اللہ پاک ہے, ٹھیک ہے, تو وہیں آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے ایک تو مایوسی نہیں کرنی اگر آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے کردار سے, اپنی پرسنالٹی سے اور اپنی ہمت سے, ٹھیک ہے, آپ یہ جمے رہیے اس پر, لوگ آپ کے ساتھ آتے چلے جائیں گے, آپ کو گائیڈنس ملتی چلی جائے گی, ٹھیک ہے, ایک بات. اور دوسرے جب آپ کچھ اچیو کر لیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اب میں یہاں پر سکون سے, اچیو کرنے کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے, ایک اپنی کمیونٹی کو, اپنے سے پیچھے آنے والوں کو, اپنے ساتھ آنے والوں کو آگے لے جانے کی ایک, اور دوسرا مزید آگے. اقبال کے شاہین کی بات ہے نا, ہم تو سچل سرمس اور شاہ عبد اللطیف بٹائی ہیومینٹی کا میسج دیتے تھے, ان کا ویژن کیا تھا, ہم تو اس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہمیں مزید آگے جانا ہے, آگے سے آگے اپنی منزلوں کو, پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, اپنی دھرتی کا نام روشن کرنا ہے. اور جیسے میں نے بتایا, اگین آئی وڈ اگین پے ٹریبیوٹ ٹو مائی اون اسکول ان لاڑکانہ, جہاں مجھے تو ڈاکٹر ہما میں ایک آنے والی پولیٹیشین بھی نظر آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی, کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے لیے سوچنا ہے, کام کرنا ہے, تو پالیٹکس کو میں غلط نہیں سمجھتا, لیکن پازیٹیو پالیٹکس, سوشو پالیٹکس, کیونکہ ہمارے پاس سوشو, جیسے آپ نے سوشو اکنامک کا نام لیا, تو ہمارے پاس تو ابھی بہت ضرورت ہے سوشو پالیٹکس کی, اس طرح کے لوگ آئیں تاکہ اس ملک کو ضرورت ہے ان تمام لوگوں کی, ذہنوں کی, خاص طور پہ زرخیز ذہنوں کی ضرورت ہے جو کچھ کرنا چاہیں. یقیناً اس بات کو آپ آگے لے جائیں گی. ڈاکٹر ہما, موقع ملے کیا کریں گی؟ آپ کو اختیارات بھی دیے چاہیں, چلے ہم نے آپ کو کچھ اور بنا دیا کچھ, تو ایک ویژن ہوتا ہے نا آپ کا, آپ نے جیسے سوسائٹی جس کا تعلق آپ نے ظاہر کیا, اب اس کو پے بیک کرنے کا اگر ٹائم مل جائے تو کیا ایسی بہتر چیز ہے جو اگر کر دیں تو ہمارے پاس زرخیز ذہن اور مزید آگے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر میں اپنی جو بھی اللہ پاک نے مجھے بہت لمیٹڈ صلاحیتیں دی ہیں, جس میں جیسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا, مزید اس سے پہ ریسرچ کرنے کا موقع دیا مجھے, میں نے ریسرچ پیپرز تو میرے ہارورڈ یونیورسٹی پہ فورم میں پبلش بھی ہوئے ہیں, اور قانون کے شعبے سے میرا تعلق ہے, تو یہ دو شعبے شاید کیونکہ اس کی تھوڑی سی مجھے نالج ہے, تو آئی ووڈ لائک ٹو پلے اے رول. ایجوکیشن میں جیسے یہ بات دوبارہ ہو جائے گی اگر آپ سمرائز کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ خاص طور پر قوم سازی کی ضرورت ہے, ایسی ایجوکیشن جس کے بعد ایسی ایجوکیشن نہ ہو جس سے میں ایک پروفیشنل ہوں, میری ہی ترقی پر ریوالو کرے. یہ جو عوام ہے نا 60-70 سال سے, یہ ان کو ڈیلیور نہیں ہو رہا, دس سسٹم از فار دیم, ٹھیک ہے, تو وہ جو شہری بنے نا, جیسے آپ مختلف قوموں کے ساتھ جاتے ہیں, سوئس قوم کے ساتھ جاتے ہیں, دوسری قوموں کے ساتھ, آپ ترقی یافتہ ممالک کی اقوام میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر میری ترقی بس, ٹھیک ہے, وہاں پر میرے اس پورے پاکستان کا ایک کامیاب قوم کا شہری کیسے بنے, ایک سیوک سینس کیسے ہو. آپ کی اتنا اچھا دریائے سندھ ہے, وہاں پلہ مچھلی ہوتی تھی, اتنا سوکھ رہا ہے, آپ ایسی پلاسٹک کی بوٹلز پھینک رہے, سیوک سینس نہیں آپ کی وہاں کی ایجوکیشن میں. دیکھیے سیوک سینس, ٹریفک کے وہ آپ میں پیشنس نہیں ہے. جب آپ اتنا ہارن, اتنا شور سن کے آئیں گے, سب کچھ کر کے آئیں گے, تو آپ میں کیا کارکردگی دکھائیں گے آپ؟ یہاں پر عوام بیسک ان تمام مسائل کا شکار ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایجوکیشن سسٹم ایسا لانا ہے کہ ہمیں ہر کسی کو ٹیکنالوجی ایکسپرٹ نہیں بنانا, ہمیں ہر ایک کو بیرسٹر نہیں بنانا, ہر ایک کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بنانا, ہر شعبے میں ٹیلنٹ نرچر ہو, اور وہ ایک ایسی قوم کا ایک حصہ ہو جس کے پاس سوچ ہو, جس کے پاس فکر ہو, اور جس کے پاس اپنی قوم کو, ٹھیک ہے, ایز اے قوم, اپنی قوم کو پوری دنیا میں ایک اچھی اور ایک کامیاب اور ایک ویلیوز والی, ٹھیک ہے, قوم ایز اے قوم آپ پروجیکٹ کریں. جی. اور دوسرا, قانون کے شعبوں میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے, اور لوگ ڈیفینیٹلی پہلے ہی بہت پریشان ہیں کہ عدالتوں میں کافی عرصے سے آپ کے کیسز پینڈنگ رہتے ہیں. ہولسٹک ریفارمز کی ضرورت تو ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہوں گی کہ جو بھی ریفارمز ہو گئیں, کم سے کم اس کو کنسالیڈیٹ کر کے کچھ تو ڈیلیور ہو جائے, کچھ تو عوام کو. جیسے فار ایگزامپل میری بات ہوتی ہے کبھی یہاں کے پروفیشنل سے, انکلوڈنگ آپ کے جوڈیشری کے لوگ یا وکیل, تو اگر ہمارے جو لینڈ ریکارڈز ہیں, زیادہ تر آپ یہ کیس کم کیسے ہوں گے, اس پر بات ہو کہ یہ کیس کہاں سے پیدا ہوتا ہے, یہ مقدمہ اور یہ ڈسپیوٹ کہاں سے ہوتا ہے. فار انسٹنس ون آف دا کاز از کہ آپ کے لینڈ ریکارڈ صحیح نہیں ہے, اس سے
पहले सिविल मुकदमा होगा कि ये मेरी नहीं है ज़मीन, ये दूसरी नहीं, उससे फिर सऊदी अरब में तो 3 दिन में वो काजी खुद पहुंच जाता है कि भाई ये क्या चीज़ क्या क्या है, रखें इस जगह पे, ये इसका हिस्सा, ये उसका हिस्सा, ये उसका हिस्सा, ये अल्लाह ताला का हिस्सा बनाया हुआ है इस बंदे का, आप इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें। जी जी, हमारे यहाँ तो फिर चीज़ें जी 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 उस तो पहले वो सिविल डिस्प्यूट, फिर आपस में खानदानी दुश्मनियाँ हो जाएंगी, मर्डर्स होंगे। तो उस एक लैंड रिकॉर्ड से जो लैंड रिकॉर्ड्स के जो आपके सिस्टम है वो अगर सही होता, ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस ये भी सोल्यूशन हो सकता है, जैसे आप मुख्तलिफ अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आपने बाहर से एक सिस्टम ख़रीद लिया बगैर देखे कि वो पूरा एक चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस है कि वो कैसे टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है और उससे वो प्रॉपर कंप्यूटराइज हो जाएँ, और ये सारे जो मेन मुकदमात की जो जड़ है उनको डील किया जाए। और वो तब हो सकता है जब ये इदारे आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करें। हम सब एक इदारा अपनी जगह एक साइलो में अगर एफर्ट करेगा कभी भी नहीं आप कामयाब होंगे, ना एज अ कौम, ना एज अ इदारा, ना आप एज अ तालिब इल्म। ठीक है, तो ये मेरी एक छोटी अब स्विस की जैसे आपने बात की, स्विट्ज़रलैंड एक अलग है, लेकिन अगर हम स्विस के बराबर स्वीडन की अगर हम बात कर लें तो वो तो बच्चे का मिजाज देख के उसको फील दे रहे होते हैं कि भाई अगर ये इसकी जब एडमिशन हुई प्ले ग्रुप में है तो वो कौन सी चीज़ों से खेलता है, तो उसके मिजाज को देख के वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करते है कि इस बच्चे को ये बनना है। जी बिल्कुल, हम तो वालिदैन के कहने पे ना डॉक्टर इंजीनियर, अब जाके कुछ और हमारे पास फील्ड चाहिए, तो ये कौम तो ऐसे बनती है। मैंने आपको बताया ना अपनी मिसाल के, मेरा जब मैंने शुरू किया था अपना सफर, तो ये कि मास्टरयानी बनेगी या फिर ये कि वो डॉक्टर बनेगी, डॉक्टरयानी बनेगी, दैट्स इट। सो या अब है तो हर इंसान को टेक्नोलॉजी में जाना है, हर आदमी को एक अपना स्टार्टअप करना है, हर इंसान की। इवन मैंने तो आपको प्लीज़ डोंट टेक इट मतलब आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिए कि एंटरटेनमेंट में मेरा मकसद ये नहीं था कि आप उसमें ना जाएं। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी क्या है, आप ऐसा कोई काम करें कि आप ऑस्कर अवार्ड लें, एज अपोज टू वही चीज़ आप उसको या आप अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ किरदार अदा करें कि आप उससे अपने लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, उनको मोटिवेट करें, अपने हिस्से का काम करना चाहिए, अपने हिस्से का काम करना चाहिए, उससे पॉजिटिविटी आप रोल क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, दुनिया में, इंसानों के लिए। आज इस बिजली पे हम बैठे हुए या फॉर एग्जाम्पल हम मुख्तलिफ चीज़ें सुन सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह के जो साइंसदान थे, एडिसन थे, उन सब ने अगर सोचा होता कि सिर्फ मेरे लिए, तो इस चीज़ पे नाम नहीं लिखा हुआ है। आपने ऐसे कंट्रीब्यूशंस करने हैं कि वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हो। हमें अपने कौम और धरती को तो डेफिनेटली सोचना है, अपने इलाके को तो सबसे पहले निकालना है उन तारीकियों से और उस सोच से। और ये बात याद रखिए कि अगर आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस हैं कि जी मेरी पर्सनैलिटी, तो फिर आप अपनी ज़मीन से अगर नहीं जुड़े हुए, अगर आप अपनी आइडेंटिटी से, मुझे एक और चीज़ भी दुख होती है कि ख़ास तौर पे यहाँ की यूथ में इतनी मायूसी पाई जाती है। मैं माना कि यहाँ बहुत सारे मसले हैं, आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान या ऐसे कंट्रीज़ को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो ट्रस्ट मी, अगर इफ इट डोंट कंसिडर इट एज अ लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। सही, ठीक है, क्या बात की आपने। मैं रियली ये आपका जो जुमला था ये मेरे लिए खुद मोटिवेशन थी कि यहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं अपॉर्चुनिटी भी तो होती है, काम करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, वहीं सोल्यूशन होगा। जब सोल्यूशन होगा तो कोई रोजगार बनेगा, वहीं अपॉर्चुनिटी होगी, वहीं लोगों की स्किल इस्तेमाल होगी। जब हमारे पास डॉक्टर हुमा जी, लोगों के पास मैंने जहाँ तक देखा है कि आइडियाज पे बात नहीं करेंगे, एक्सक्यूजेस पे बात करेंगे जी, फला एक्सक्यूज, फिर ये फिर वो। वैसे भी कहते हैं ना, विनर्स के पास हमेशा आइडियाज होते हैं, लूजर्स के पास हमेशा एक्सक्यूजेस होते हैं कि मैं ये हुई, मेरा गाड़ी खराब थी, मैं सो नहीं सका, और मुझे जो फलाना इतना मुझे तो पता ही नहीं था, तो एक्सक्यूजेस होते हैं यहाँ पे। लेकिन विनर्स के पास आइडियाज होते हैं, वो आइडियाज पे काम करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को खुद बनाते हैं। आखिर में हमारे पास 3 मिनट रह गए। 3 मिनट में क्या पैगाम है डॉक्टर हुमा के पास जो तमाम देखने वालों के लिए यादगार साबित हो? मैं आपसे ये आई थिंक इतने अच्छे डिस्कशन के बाद इस चीज़ को सम अप कर देना इन इटसेल्फ, और सबसे बड़ी बात है जब आप खुद उस सोच में हो कि वाकई में अपने मुल्क कौम के लिए कुछ गुजरना है, तो उसमें उस इख्तिसार के साथ उस छोटे लफ्ज़ों में बात करना एक चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी। मैं ये कहूँगी कि हार्ड वर्क, ठीक है, और कंसिस्टेंसी, ठीक है, परसिवियरेंस, कुछ भी हो जाए, आपने रास्ता मुश्किल हो आसान हो,
या आप कुछ अचीव भी कर लें तो आप में कंटेंटमेंट नहीं आ जाए। आपने आगे से आगे अपनी नई मंजिलें तलाश करनी है, खोजनी है, और ये याद रखिए इन तमाम चीज़ों को, कामयाबियों को हासिल करते हुए अपना ग्रेटर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एक नैरो ऑब्जेक्टिव था कि मैंने सिर्फ एक प्रोफेशनल सक्सेस लेनी है या एक सर्टेन इकोनॉमिक आपने पोजीशन स्टेटस लेना है कि जी मुझे मेरे फाइनेंशियल हालात ये हो जाएं या मैं ये प्रोफेशन में बन जाऊं, नहीं, आपका ग्रेटर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ होना चाहिए और आपका किरदार, पर्सनैलिटी, ठीक है, और आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं, आप जो भी फॉलो करते हैं, ठीक है, वो उन वैल्यूज़ को आपने लेके चलना है। उन पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको दुनिया में और मुख्तलिफ आप कहीं पर भी जाएंगे, जैसे मैंने मुख्तलिफ इदारों में काम किया, वो अगर वहाँ पे जो अंग्रेज़ थे अगर वो आपकी मेरी इज़्ज़त कर रहे होते थे तो किस लिए कि अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या कोई भी कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स हुमा के पास दिए हैं तो वो कुछ भी हो जाए वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेंगे, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ जब नहीं करती तो इसमें इंटेग्रिटी है। क्या बात कही आपने, ज़बरदस्त, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और एक मोटिवेशन है, आप ख़ुद एक मोटिवेशन है, और मोटिवेशन के साथ जो आप बात करती हैं तो ये ख़ुद मेरे ख्याल से मशाल राह है उन तमाम हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए और भाइयों के लिए जो कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, ट्रैक्स हमारे पास मौजूद हैं, विल होनी चाहिए कुछ करने की। और हर शख्स में, आई थिंक एक लफ्ज़ में मैं ये कहूँगी, आप सब में, हर शख्स में एक सितारा छुपा है। जाइए अपने सितारे को ढूंढिए, उसे पॉलिश कीजिए और उसे इस दुनिया के आसमान पे चमका दीजिए। क्या बात, और अपनी कौम का फख्र बनिए। क्या बात है। आखिर में आपके वालिद साहब ने आपका कितना साथ दिया? बहुत ज़्यादा। मेरे वालिद साहब, मैंने तो आपको अपने दादा से इंट्रोडक्शन कराया कि वालिद साहब, दादा, मेरी वालदा और मेरे घर में मेरी नानी, यानी ये तमाम मेरे घर के जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन उनकी सपोर्ट और अगर उनकी दुआएं ना होती, आज आपको लग रहा होगा कि मेरी थोड़ी सी शायद जो कामयाबी है वो मेरी हार्ड वर्क की वजह से अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके पीछे कितने मैंने आपको बताया ना, नस्लों की एक सोच है और मेरे वालिदैन की अनथक मेहनत है, दुआएं हैं। और मैंने तो आपको मैंने अपना रिसर्च पेपर में मैंने डेडिकेट किया है अपने दादा और नानी को। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हुमा, बहुत खुशी आपसे मिलके, अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और आपके सोच को मैं रियली आई अप्रिशिएट इट कि पॉजिटिव वाइब्स जहाँ पे भी हों तो वो हम अपना असर ज़रूर दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन। दोस्तों, अॼु ख़ैर सां जुमो आहे ऐं असांजो प्रोग्राम तो पंज पुॼाणी ते पहुतो आहे, पर हुन सां गॾोगॾु रमज़ान अल मुबारक जी आमद आहे। थी सघे थो मंडे ते पहिरियों रोज़ो हुजे या ॿियो हुजे या टियों जेको बि आहे, या पहिरियों हुजे, या उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं ख़ैर ख़ैरात कढणी आहे त टाइम सां कढिजे। ऐं अॼु जुमे ते जॾहिं बि असां वटि ख़ासि तौर ते पाकिस्तान में अॼु आहे न त चांवरनि जो आलमी ॾिहाड़ो, क़ौमी ॾिहाड़ो हूंदो आहे, किथे न किथे बिरयानी ठहंदी, को पुलाउ ठहंदो या कुझु हूंदो, या भाॼी ठहंदी, कुझु बि ठहे। असां हमेशह जुमे ते हिकिड़ी दरख़्वास्त कंदा आहियूं त हिकु लप चांवरनि जी या हिकु लप अटे जी विझी करे पंहिंजे घर भातियुनि सां गॾु कंहिं ॿिए जे लाइ बि उनजे पेट जो बंदोबस्तु कंदासीं। अॼोके ॾींहं ते इहा नियत करे ख़ैरात ई सम्झी वराईंदासीं त अलाह साईं वाक़ई ख़ैरु कंदो आहे। पंहिंजे मेज़बान सजाद सुहा खे ॾींदा इजाज़त। ऐं हा, दुआ में ज़रूरु यादि कजो, जुमे जो ॾींहुं बाबरकत ॾींहुं, मूंखे दुआ ते ॾाढो यकीन हूंदो आहे ऐं तव्हां सभिनी जी दुआ में थी सघे तव्हांजी दुआ सां मुंहिंजा के अहिड़ा कम हुजनि जेके मुंहिंजे अंदर में उणतुण हुजे उहा हल थी वञे, त तव्हांजी दुआ सां शल हल थी सघे। मुंहिंजी सभिनी जे लाइ इहा दुआ आहे त रब पाक सभिनी खे ख़ुशि रखे, आबाद रखे ऐं दिलि जूं मुरादियूं पूरियूं करे। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। वरी इंशाअल्लाह ताला थींदी तव्हां सां मुलाक़ात। पंहिंजे मेज़बान सजाद सुहा खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।